अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश में पेज नंबर 47 पर जो इंग्लिश वर्कशॉप दी गई है उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमेन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन। हमें यहाँ पर बोला गया है कि टीनी टाइनी वुमेन का जो घर है उसके बारे में मालूमात दीजिए स्टोरी और इमेजिनेशन पावर की मदद से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा द टीनी टाइनी वुमेन हैड अ वेरी स्मॉल हाउस। It was suitable for the teeny tiny woman. The stairs of her house were very small. Her bed, cupboard, and other things in her small house were very small. Her clothes too were tiny. Question number 2. Read the following sentences and fill in the blanks. पहला सेंटेंस है The teeny tiny woman lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. नेक्स्ट है The teeny tiny woman went out to take a teeny tiny walk. Next sentence है The teeny tiny woman went into a teeny tiny churchyard. Next, the teeny tiny woman found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. Next, the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket. Number 6, the teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. Number 7, the teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard. Next, the teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. Number 9, the teeny tiny woman said in her loudest teeny tiny voice. इस तरह से आप ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड टीनी टाइनी इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स. Words like teeny tiny are mostly used in informal language. Children's stories and songs, folk tales, etc. Write other words like teeny tiny. हमें यहाँ पर बताया गया है कि टीनी टाइनी एक कंपाउंड वर्ड है। इसका मतलब होता है कि टीनी टाइनी एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। तो इसी तरह के और कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर तैयार करना है। पहला वर्ड होगा इंसी विंसी। नेक्स्ट टिक टॉक. नेक्स्ट फ्लिप फ्लैप. नेक्स्ट हिकरी डिकरी. नेक्स्ट चिट चैट. नेक्स्ट क्रिस क्रॉस. नेक्स्ट डिंग डोंग. नेक्स्ट बो वाव. इस तरह से आप कंपाउंड वर्ड्स तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यूज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स you have made in the activity on page 44. See if you can write funny oblique meaningful sentences using one or more of these adjectives. For example, a big red ant found a big red grain of corn in a big red house. Next, the little silver fairy cut the little silver paper with little silver scissors. हमें यहाँ पर बोला गया है कि पेज नंबर 44 पर एक्टिविटी में जो हमने एडजेक्टिव्स की लिस्ट बनाई है उसका इस्तेमाल करके हमें फ़नी या मीनिंगफुल सेंटेंसेस तैयार करना है और यहाँ पर हमें 2 मिसालें भी दी गई है। आइए इस तरह के और सेंटेंसेस तैयार करते हैं। पहला सेंटेंस होगा अ स्मॉल ग्रीन पैरोट फाउंड अ स्मॉल ग्रीन चिली इन अ स्मॉल ग्रीन प्लांट. नेक्स्ट, अ फैट राउंड पिग ate a fat round pumpkin from a fat round basket. इस तरह से आप सेंटेंसेस तैयार कर सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमेन फ्रॉम योर मदर टंग. ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो मादरी ज़बान है उसमें हमें एक बूढ़ी औरत की कहानी सोचना है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। तो आइए एक बूढ़ी औरत की कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द ओल्ड वुमेन एंड द पम्पकिन. इन ओल्ड टाइम्स देयर वाज एन ओल्ड वुमेन. शी लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड शी हैड अ डॉटर. बट हर डॉटर वाज ग्रोन एंड लिव्ड इन हर हस्बैंड्स होम. द होम वाज वेरी फार अवे. वन डे शी वांटेड टू गो
to her daughter's home. She made a gift for her daughter and she left to go to her daughter's home. She walked and suddenly she saw a wolf in her way. The wolf said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The wolf said, "Okay, go." The old woman walked and suddenly she saw a lion in her way. The lion said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The lion said, "Okay, go." She walked and suddenly she saw a tiger in her way. The tiger said, "I want to eat you." The old woman said, "Don't eat me. I am going to my daughter's home. There I will eat food and I will be fat. You should eat me on the way home." The tiger said, "Okay, go." So the old woman went to her daughter's home. Her daughter was preparing a pumpkin to cook. The woman said, "My daughter, the animals in the forest want to eat me." The daughter said, "I am preparing a pumpkin, but we will not eat it. We can use it to cover you." After a happy time with her daughter, the old woman said it was time to go home. The daughter put the pumpkin cover her mother and said, "Now you can go home." She walked and saw the tiger. The tiger said, "Tell me, did you see an old woman?" The pumpkin said, "No." The tiger said, "Okay, goodbye." She walked and saw the lion. The lion said, "Did you see an old woman?" The pumpkin said, "No." She walked and saw the wolf. The wolf said, "Did you see an old woman?" The pumpkin said, "No," and hurried to her house. When the old woman got to her house, she took off the pumpkin and ate it. This is how the old woman saw her daughter and didn't become dinner. Question number 6. Discuss and write briefly. पहला क्वेश्चन है, What you should do when you find something in the street? इसका आंसर है, If I find anything in the street, I would think carefully before I touch it, because it might be dangerous to touch or lift an unknown thing. So I won't touch it, though it is attractive or valuable. I will advise others to resist temptation. Next question है, What could have happened when the old woman said, "Take it"? इसका आंसर है, The bone must have come out of the teeny tiny cupboard and must have flown to the grave. इस तरह से यहाँ पर ये इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।